So, hello everyone and very good morning all. समस्त पिला माने good morning. तो हमें start करिया पिला माने हमारा pedagogy section. I have collected some sorts of important questions today, which you can take it as a mock test 1. So assess करी निजो को देखिबो पिला माने तमरा last को केते score होची. Start करिबा? Yes. The first question for you. During the preparation of the test, the paper teacher takes care of items development according to dash. During the preparation of the test, the paper teacher, जे paper prepare करुची, he always takes care of item development according to dash. जो क्वेश्चन से तैयारी करुची, yes आणवेज जो क्वेश्चन गुड़ा से तैयारी करुची से क्वेश्चन गुड़ा का अकॉर्डिंगली डैश अकॉर्डिंगली से तैयारी करबा दरकार. नॉमिनेटेड इवैल्यूएटर द्वारा जो इवैल्यूएटर तैयारी हेची तांकू देखि कि से क्वेश्चन बनाइबो ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेसिस रे ना नंबर ऑफ कॉपीज केते खाता दिया हबो केते क्वेश्चन दिया जिवो ना सिटिंग अरेंजमेंट सब बेले व्हेन ए टेस्ट मेकर इज मेकिंग ए टेस्ट instructional objective is very much important. So answer will be instructional objectives like knowledge based question केता देबी, understanding based question केता देबी, कि मो analysis based question केता देबी, सब ऊपर गुरुत्व थिबा दरकार. Yes or no? Yes. Question number 2 for you. There is an initial test before actual construction of a test. Construction माने टेस्ट कंस्ट्रक्शन बा टेस्ट तैयारी पूर्व मन कर क्वेश्चन प्रिपेयर करूछ क्वेश्चन फाइनली पब्लिश होगा पूर्व गोटे इनिशियल टेस्ट को कहा जाए. सर से इनिशियल टेस्ट को हमें कौन कहू, प्लानिंग कहू, प्रिपरेशन कहू, पायलट स्टडी कहू ना ट्राई आउट कहू, फाइनल ट्राई आउट कहू, कौन कहन तक व्हाट डज इट कॉल्ड? व्हाट डज इट कॉल्ड? Planning, preparation, pilot and final tryout. What do we call it? This is called tryout. कौन कहू tryout? We call it tryout. पिला मन कह जाए कौन कह जाए tryout. Yes. Before going to the next question, पिला माने समस्त सेशन को शेयर कर दियंतु, सेशन को शेयर कर दियंतु और लाइक कर दियंतु. शेयर द सेशन. Yes. Okay. Come on to the next question. Which of the following should not be the indicator for assessment in EVS? EVS हो कि जे कोन सब्जेक्ट हो कोटा असेसमेंट ओटे इंडिकेटर हबा कथा उचित नुहे. कोऑपरेशन रहया कथा, रिमेंबरिंग, क्वेश्चनिंग, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी. सर कोऑपरेशन, रिमेंबरिंग, क्वेश्चनिंग, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी. कोऑपरेशन तो रहिबा कथा, क्वेश्चनिंग कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी रहिया कथा. बट ए जो ऑप्शन ना देछि रिमेंबरिंग ताको मेमोराइजेशन भी कहि परिबो, रोड मेमोराइजेशन भी कहि परिबो, क्रैमिंग भी कहि परिबो, जोटा कि नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी, जोटा कि नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी, दैट शुड नॉट बी देयर. यस यस. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Formative form of evaluation is based on the principle of dash. Formative form of evaluation कहाँ पर बेस? Good category of result, rote learning, minimum level of learning ना imitation. Formative
रे पिला माने आमे रिजल्ट पर तो गुरुत्व दउना दैट इज द पार्ट ऑफ द समेटिव प्रोसेस मेमोरी भी नेगेटिव वर्ड इमिटेशन अपेक्षा आमे सब दो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बा मीनिंगफुल लर्निंग बा अदरवाइज कोन दो मीनिंगफुल लर्निंग इट लर्निंग आउटकम पर गुरुत्व दिया जाए लर्निंग प्रोसेस पर गुरुत्व दिया जाए यस जाको हम एमएलएल बोली कहू एमएलएल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertains डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहां पर गुरुत्व दिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन causes and remedies of persistent learning problems during instruction पाठ पढ़ा हला बेले पिला माने जो प्रॉब्लम फेस करछन ता ऊपर ना डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड लर्निंग प्रोग्रेस एंड इंस्ट्रक्शन एंड फेल्योर इंस्ट्रक्शन सर एटा होची फॉर्मेटिव एटा होची समेटिव एटा होची प्लेसमेंट एटा होची डायग्नोस्टिक सो ऑप्शन बी होची डायग्नोस्टिक option A is the placement, option B is diagnostic, option C is summative, option D is formative. Okay, so its answer will be causes and remedies of persistent learning problem or difficulties during the instruction. Coming to the next question, which of the following statement indicate constructive perspective of assessment? कोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट को बुझौछि कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स इन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर दिया है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी देछि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर देछि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट बा एसएमसी देछि हमें जहां भी करू छे एवरीथिंग इज फॉर लर्नर सेंट्रिक कंस्ट्रक्टिविज्म रे लर्नर सेंट्रिक ता बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे आको काटो रहिला ऑप्शन सी सो सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ओके the format of testing most suitable to assess the student's ability to judge the validity of statement is called as test गोटे स्टेटमेंट वैलिड कि इनवैलिड जानिबा पई हमें को वाला क्वेश्चन यूज करू ट्रू फॉल्स आइटम यूज करू ऐसे टाइप यूज करू कंप्लीट द स्टेटमेंट क्वेश्चन यूज करू ना सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन यूज करू सर गोटे स्टेटमेंट वैलिड कि इनवैलिड बा ट्रू कि फॉल्स जानिबा पई हमें ट्रू फॉल्स टाइप यूज करू यस टू decide the validity of a statement whether it is valid or invalid okay अपन पे आराध्य प्रो बैच आरा 247 रे आरआई अमीन रो बैच अगस्त 8 स्टार्ट हो पे जाउस पिला माने जो माने परचेस करे पे चाहउसंती किबा संगसाथी मानको परचेस करे पे चाहउसंती यू कैन अप्लाई माय कोड y594 चंद्र इज स्टैंडिंग अंडर माय कोड उच्चारण बैच 31 जुलाई स्टार्ट हो पिला माने स्पोकन इंग्लिश रो बैच आरा 247 रे ओके यू कैन परचेस दिस so सोना ani light effect पकुछ in order to correlate test scores with teachers estimates a teacher could माने मु एस्टिमेट करथिली जे पिला एति केति रखिए बोली टेस्ट स्कोर को मु ता सहित जोड़िबा दरकार मु भाबिथिली जे हां ए पिला एति की स्कोर करिवे ए पिला एति की स्कोर करिवे ओके यस हम कोन कहबा
Correlate with the other test scores and classroom observation. Conduct test under street vigilance. Street what a negative what? Ask parent to validate scores in the test. Allow for multiple choice question to be answered. केवल multiple choice question. अब बाकी मु एस्टिमेट करछि जे मोर ए पिलाती एतिके स्कोर करी बोर्ड परीक्षा कली तार स्कोर बाहरला आकु ए जो प्रीवियस स्कोर से तो कंपैरिजन करबा तार लक्ष्य कोन केमति कंपेयर करी मु कोरिलेट करी टेस्ट स्कोर सहित आ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सहित मु क्लासरूम ऑब्जर्व कर जे पिलार स्टैंडर्ड है यस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर commonly 5 types of validity are used in preparing tools which of the following is not one of them generally 5 प्रकार validity हम यूज करू कोडा होय तो validity नुहे face validity content validity construct validity predictive validity सर आउट अछि हमरो concurrent validity एटा जे productive validity आउट अछि predictive validity concurrent validity predictive validity but not there is no productive validity so answer is option D there is no productive validity so answer is option D the prime focus of NCF was a child centric learning and dash चश्मा आनी लाइट इफेक्ट बहुत भूली गला चश्मा द प्राइम फोकस ऑफ एनसीएफ वाज चाइल्ड सेंट्रिक एंड डैश लर्निंग विदाउट बर्डन लर्निंग थ्रू प्लेवे लर्निंग थ्रू बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लर्निंग थ्रू पिक्टोरियल्स खाली छवि देखी पढ़ेगा जमा भी नुहे लर्निंग थ्रू बिहेवियर तो नुहे लर्निंग विदाउट बर्डन हे पारे भल ऑप्शन लिखा है लर्निंग थ्रू प्ले वे भल ऑप्शन ए बीटा भी भल ऑप्शन बट ऑप्शन ए इज वेरी गुड लर्निंग विदाउट बर्डन सर लर्निंग विदाउट बर्डन कमिटी किए देथिले सर प्रोफेसर यशपाल एटा कमिटी केबे आस्तल 1993 रे सर यशपाल मध्ये होउछंदी एनसीएफ 2005 रो चेयरमैन एस प्रोफेसर यशपाल इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ एनसीएफ 2005 so his answer is option A yes okay next question the silent features of NCEP 2005 are divided into 5 parts. Select which one of the following is not a silent feature of NCEP 2005. कोड़ा NCEP 2005 रो silent feature नु है. Which one is not a silent feature of NCEP 2005? School and classroom environment, systematic reforms, curricular reforms, financial reforms. तो सबुड़ा को स्कूल का सिस्टम करिकुलम आप एनसीएफ 2000 गुरुत्व देथिला 2005 बट एनसीएफ 2005 has not given importance on financial reforms. So its answer is option D. Which of the following is applicable for secondary and higher secondary students? कोटा secondary और higher secondary students मानक पे applicable. ठीक है जी.
adolescents should be exposed to moderate level of intellectual and physical difficulty. It's difficult to compare adolescent to others so that growth can be accelerated. Adolescents need presence of emotionally supportive adults other than parents. Adolescents try to conform to the standards set by parents and teachers. Adolescent regarding code statement are correct. Adolescents should be exposed to moderate level of intellectual and physical difficulty. Adolescent पिला मानू केवल moderate level रो intellectual और physical difficulty बा पाठ पढ़ा moderate level दबा दरकार. एटा adolescent level रे सबुठु highest intellectual development हुए. एटा काटो. It's important to compare to others. Sir, comparison तो negative word. Comparison तो negative word. You cannot compare the child. Adolescents need presence of emotionally supportive adults other than parents. बापा माँ को अपेक्षा सांग साथी माने हेले टीचर माने हेले सेमानन को इमोशनल सपोर्ट दवा दरकार. ठीक अछि, भल ऑप्शन. Adolescents try to conform. अन्य माने पेरेंट्स और बापा माँ जहाँ क्वेश्चन तांको कथा पूरा मानि चलंती. इम्पॉसिबल कथा, इम्पॉसिबल कथा. ओके, ठीक अछि. तो इस आंसर इज ऑप्शन सी. आंसर सी. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 13 देख पिला माने सुना आनी सुदाय. चश्मा केवल पिंधे लाइट रे इफेक्ट टा बनसे पे आखिरु से चश्मा जीरो पावर बट लाइट रे इफेक्ट टा बनसे बिकॉज़ एक्सीडेंट पे पड़ा आखिटे मोर छाड़ो. डिस्कशन हेल्ड बाय ए टीचर विथ हर स्टूडेंट्स on ways of improving the students work refers to which of the following theories? Discussion held by a teacher with her students on the ways of improving students work refers to which of the following theories? Discussion held by a teacher with her student. Teacher तांग students मानक सहित discuss करसुंदी केमिति student रो work को आमे बढ़ाई परिबा. Always when student are बुझिबो तो always when students are student मान उठर जत आमे एक्सपेक्ट करू student मान भीतर पर्टिकुलरली बिहेवियर डाउन रहया पई. This is called as expectancy and value theory of motivation. Theory जोटा होते कोदनो क्लास कर देबी मु सब जगह theory कोदनो क्लास कर देबी. हां, if three kinds of meat, cheese, bread are given, तीन प्रकार मांस, चीज, ब्रेड, लवणी हो कि ब्रेड आमर जो रोटी दिया गला. A student can determine many different sandwich that could be cooked. पिला माइंड आसला जे हाँ मु आकु नहीं कि भिन्न भिन्न प्रकार सैंडविच तैयारी करि परिबी. पिला भीतर ए जो कैपेसिटी अछि थिंकिंग combinatorially in solving abstract and hypothetical problems possible. Now operating logical with concrete material and concluding. Now goal directed behavior. Now thinking symbolically dominated by perception. कोड़ा को कहबो. भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट को मिसई की सैंडविच तैयारी करछि आकु कह जे थिंकिंग combinatorially. It is called as thinking combinatorially. Combination of objects. Sir, Rajesh misses a month of school because of illness. गोटे मास स्कूल को आसलानी तार देह खराब थिला बोली. When he returns to school, he does not know what to do his long division assignment. जब स्कूल को आसला से चिंता करि पालन जे एत बड़ असाइनमेंट से करिवो केमती सारिवो केमती. After number of frustrating experience in which he fails long division problem जो करने नहीं
डिवीजन जो शॉर्ट डिवीजन प्रॉब्लम और लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम बारंबार ट्राए करी करी मध्य से करि पैला नाही he feels anxious whenever he encounters a division task जेतबेल ताकू डिवीजन टैक्स दिया गला सब बेले से anxious होला जानि पाइले नहीं yes as per the classical conditioning theory the emotional unconditional stimulus is dash इठी emotional unconditional stimulus ता तार कोन इठी emotional unconditional stimulus ता तार कोन anxiety about failure na failure or frustration na long division problem ना एंजाइटी अबाउट लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम खाली लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम नहीं से सब प्रकार डिवीजन प्रॉब्लम करि परनी केवल लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम नो से कौन सी प्रकार डिवीजन टैक्स से करि पर नहीं एंजाइटी अबाउट फेलियर ना फेलियर और फ्रस्ट्रेशन फेल भी है छे फातो से फेल हैला लिखा है जेटी he fails and got frustrated yes so this is called failure and frustration failure and frustration at a school teachers Sima is entitled to providing human resource providing legal action and legislation get only positive feedback from supervisor adopting collaborative and cooperative teaching खाली ह्यूमन रिसोर्स खाली लीगल एक्शन खाली पॉजिटिव फीडबैक पुनः सबुठ बेसी इंपोर्टेंस होची पिला मानक भितरे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच डेवलप करबा हना नै तो दैट विल बी द राइट आंसर कष्ट हो जाय which of the following construct does the RT Act 2009 advocate RT Act 2009 कहा पर गुरुत्व दोछ inclusive education segregation mainstreaming integrated education sir RT Act 2009 always focuses on CC as well as inclusive education so its answer is option A inclusive education according to RT Act 2009 working hours as for the teachers are dash RT 2019 अनुसार वर्किंग आवर टीचर मानक पई केते 45 आवर्स नहीं यस एलिमेंटरी टीचर मानक पई 45 आवर्स learning is the difficult development that comes from exercise and effort through learning children acquire competency in using their hereditary resource learning रे पिला मन निजर हेरिडिटरी रिसोर्स को यूज करी पाठ पढन दे कथा किए कहितले वाज सेड बाय हरलॉक वुड्सवर्थ स्मिथ मर्फी लर्निंग रे हेरिडिटरी रिसोर्स इंपोर्टेंट रोल प्ले करे बोली दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय एलिजाबेथ हरलॉक 1942 ऑप्शन ए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एतर किछि कहबा नै खाली ओटे वर्ड बजाय अछि जे हेरिडिटरी रिसोर्स ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस गेट्स cognitive theory emphasis on limiting the pressure of reducing working memory one of the method of reducing information pressure is called as chunking आमे कौन कहबा चंकिंग आमे कहा कहबा कहितल चंकिंग तुमको सब जो फोन नंबर में मन रखछन 7978 इन मन रखछ 969164 एमिति आमे फोन नंबर मन रखना 798796164 एमिति आमे मन रखुन ना आमे जोड़ी दो 7978 969 164 जोड़ी दवा combining separate large items in meaningful units yes it is analyzing memorizing and the capacity to regulate এটা তো হবনি কথা yes বুঝছো তো it is called as combining the large items into meaningful items किसी न बुझी घोषिबाटा कौन चंकिंग
किछि न बुझी घोषिबाटा को जाए मेंटेनेंस रिहर्सल बारंबार घोषिबा formal learning is the reality of modern age. Which of the following statement best describe the need of formal school for the modern society? Modern society as you go to formal school आवश्यकता कौन पे अछि? Innate learning is no longer sufficient for to adapt to change of the digital age. Digital age रे खाली innate learning हेला हबनी मु घरे बसी पढदेला हबनी मते आसीया दरकार मते इंटरैक्ट हवा दरकार मते बहुत सारा जिंस मते शिखिया दरकार ठीक अछि. It provides discipline and regimentation required for the modern age. Nine. It provides appropriate social space for learning to happen. कर दियंतु social space हे पारे भल ऑप्शन. Actually ways of learning is no longer available सेंति किछ मान नै. ऑप्शन सी अपेक्षा ऑप्शन ए टा बेटर पिला माने. आज के जो डिजिटल एज रे खाली इनेट लर्निंग काम दबनी तुमको इंटरेक्शन काम दरकार सोशल जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इज badly necessary. Yes, so its answer is option. In designing the curriculum, it's most important to keep in mind that the primary years of schooling should focus on real life experience. आमे जते बेले करिकुलम डिजाइन करछ हम सब माइंड रखिया दरकार जे प्राइमरी इयर्स ऑफ स्कूलिंग सब बेले रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर फोकस होबा दरकार दैट सराउंड द चिल्ड्रन पिला चतुर्पार्श्व सहित प्राइमरी स्कूल लर्निंग दा पिलार कनेक्ट होबा दरकार लर्निंग अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन देम अबाउट फैमिली स्ट्रक्चर एटसेट्रा बिकम द कंटेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग दिस डेज प्राइमरी स्कूल हम सब पिला माने पढाऊ पशुपक्षी माने कोड रहंती तांको परिवार विषय रे सब ए सब मल्टीपल विषय रे पढाओ ठीक अछि. So this is because children in this stage exhibit this. एटा एमिति करा जाय काहे केमति करा जाय an ability to think logically about concrete objects obviously an ability to think abstract object primary years are abstract thinking ase nahi perception and dominating children's thinking usage of sense and motor activities sensory motor तो बहुत छोट पिला रही जाउची सर एठी सब बेले हमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करे पिलार कोन logically about concrete objects answer will be option A. Come to the next question. A young father helping his toddler learn to walk could hold his hands for a while and leave his side and hold the hand again when the road is bumpy. रोड रे जतले खाला अछि हम होछि ऊपर उच्चाडा बम्प होछि तळटा ता हाथ धरि चलाउछि यंग टॉडलर माने छोटे टॉडलर जतले चली आसु आराम करछि वर्षिका 2 वर्षीय छुआ तब धरि चलाउछि जतले पिला अटकी जाउछि प्लेन रोड छाड़ देला चल तू पुन खाला असला हाथ धरि पकोछि सर ए जो सपोर्ट को हम कोन को दिस सपोर्ट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग दिस सपोर्ट इज कॉल्ड एज कोन scaffolding. Sir, behaviorist theory defines learning as dash. Behaviorist वाला learning को कोबला define करते हैं. Knowledge that we possesses, set of skill that human master, change of behavior due to experience, the ability to solve problems. Behavioring मानों को द्वारा जिन्हें वाटसन को definition होगी. Learning is a relatively permanent change in behavior. That is the definition of Watson. So learning always changes the behavior due to experience. That एटा सबले के माने बिलीव करन बिहेवियरिस्ट माने सर बिहेवियरिस्ट सब को माने थॉर्नडाइक पावलोव स्किनर वाटसन very young students while learning floating object may conclude anything heavy sinks that many conclude that anything heavy sinks
तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट विषय पढ़ा हो सी कंक्लूड कले जे जो जिनस भारी से बुड़ीज जो जिनस हल्का से भाषो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एटा को बड़ा एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एटा को बड़ा एग्जांपल thinking with reference to a single variable only, inability to active relevant schema, fitting new information into existing schema, or lack of instructional support. कौन कहबा आपको केवल गोटे सिंगल तंग माइंड रहिला जे भारी जिंस बुड़ी जीव हल्का जिंस भासिबो they think with reference to single variable only. Option A. Fitting new information किसने है? Use of defense mechanism as a strategy for adjustment was originally introduced by whom? Sir, defense mechanism concept जो आपको मैं mental adjustment concept बोली कहूँ ठीक है आपको मैं कौन बोली कहूँ अब्राहम जेटा किए देथिले डिफेंस मैकेनिज्म कांसेप्ट was first introduced by whom? It was first introduced by Sigmund Freud and her daughter Anna Freud and daughter Anna Freud. So dash has the advantage of providing a focal point of attention for the whole class and can be used for a variety of purposes. Dash has the advantage of providing a focal point of attention for the whole class and can be used as a variety of purpose. Picture chart, film strip, blackboard slide. Variety purpose रे हम केवल यूज कर पारे काको ब्लैकबोर्ड काको यूज कर पारे ब्लैकबोर्ड को विभिन्न प्रकार पर्पस रे हम यूज कर परिबा यस when students with special education needs are made to fit into pre-existing structure special education जहाँ दरकार डिजेबल पिला मानक जदि pre-existing structure माने mainstream education ताको जदि भर्ती कर दिया जाउची ए प्रकार एजुकेशन का हम कोन कहउचे स्पेशल एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन रिमेडियल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन फिट कर दिया जाता है तो उसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जाता है It is called as integrated education. In a heterogeneous and mixed ability class, heterogeneous class माने जो multiple variety छुआ छन different type रो learner छन सेतरे टीचर कोन करिवो should employ one type of teaching जमा भी नहे use a variety of teaching obviously sir जाको हम कोन को differentiated instruction जाको हम कोन को differentiated instruction always try to use variety of teaching method variety of teaching approach yes okay done जीवा next question while learning theory suggests that learning occurs through the observation and imitation of others. Co-learning theory कही जे learning occurs through observation and imitation. Behaviorism, constructivism, social learning theory, cognitive theory. Sir, observation और imitation पर गुरुत्व देछि social learning theory आलबड़ बंधुरांकर जहाँ को हमें imitational learning theory बोली कहू social cognitive learning theory बोली कहा जाए मॉडलिंग भी कहा जाए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाए ओके these are the different other names of social learning theory. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, which stage is characterized by ability to think logically and perform mental operation. Logically thinking करिया हमें start करू बा logically thinking करिया पिला माने भाबंती सेठी they can think logically sir एटा होजी sensory pre-operational concrete and formal. Its answer is option C. In Bloom's taxonomy, which level involves the ability to analyze
and break down complex concept into smaller part. When break down, we are breaking down information. Ako remembering ko aje, understanding ko aje, analyzing ko aje, na applying ko aje. When you break down information, it is called as analyzing or analysis. Information को break down करिवा, ताना ताना करी part करी भांगिवा. Eta. It is called analyze. Done. Which of the following is not a component of Howard Gardner's multiple intelligence theory? Gardner का multiple intelligence theory logical mathematical तो अच्छी, linguistic भी अच्छी, spatial भी अच्छी, visual spatial, but there is no emotional intelligence. Sir, emotional intelligence कथा sir कोई चंदे Daniel Goleman. किए कोई चंदी Daniel Goleman. According to Lev Vygotsky, zone of proximal development, what does the zone refers to? Zone of proximal development zone कहाँ को refer कर? The difference, the physical space where learning takes place, the difference when a learner's actual development level and potential development level भीतर जो difference था, the time period during which learning is most effective, the learning environment including peers and teachers. तो zone हमें कहूँ the difference between a learner's actual development and potential development level. Yes. Which teaching method involves representing the content in small steps and continuously assessing students' understanding before proceeding to the next step? आमे continuous assess करू छोटा छोटा step पे पिलानु पाठ पढ़ाऊ कोथरे direct instruction, inquiry based learning, project based learning ना flipped classroom. सीधा सड़क एटा सर हुए. It is direct instruction. It is direct instruction. Okay. Project based learning में direct instruction. Which assessment strategy encourages students to demonstrate their knowledge, skills through real world tasks? Formative, summative, performance, standardize. Sir, real world tasks में सब लोग गुरुत्व दो co-assessment रे, performance assessment. Co-assessment, performance assessment. What is the term for a teaching strategy that involves asking students to explain or concept or solve a problem to reinforce their understanding? ए प्रकार टीचिंग स्ट्रेटजी को मैं कौन को कोऑपरेटिव लर्निंग, रोल प्ले, स्कैफोल्डिंग, peer teaching. We call it what? Cooperative, role play, scaffolding, peer teaching. Which term is referred to a teaching strategy that involves asking students to explain a concept or to solve a problem to reinforce their understanding? Scaffolding the teaching strategy नहीं, teaching support नहीं पाए. This is called as peer teaching. आपको peer teaching कहा जाए. Okay. Which of the following best describe the Socratic method of teaching? Socratic method जहाँ को मैं क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहूँ, जेहेतु तार फाउंडर होसन सॉक्रेटिस काले खराब भाभी जे तैसमें ताको ना रे Socratic method of teaching बोले दिया जाइए. Lecture based, group discussion, asking probing question. Yes, question. It is question answer method. It is question answer method. Done. Sir, in classroom management, what is the primary purpose for establishing clear and consistent rule and routines? हमें consistent rules and regulation establish करिवा दरकार निहाती काहेंकी to make the teacher's job easier, teacher job easier कर देवा पाई, to control and discipline student, to create a positive and structured learning environment, reduce the workload of students. कौन पाई करा जाए? कौन पाई करा जाए? Classroom management रे to make the teacher's job easier, to control and discipline student, to create positive and structured learning environment. A positive और structured learning environment important role play करे नहीं? Yes. According to Jerome Bruner's theory of cognitive development, which mode of representation involves organizing information into logical categories and hierarchy? Enactive mode, iconic mode, symbolic mode, or hypothetical representation?
सर लॉजिकल एनालिसिस कथा पड़ी जोटा को होची हायर ऑर्डर इनएक्टिव तो बाय एक्शन आइकॉनिक होची बाय पिक्चर जो लॉजिकल कैटेगरी जो हायर एक्टिव सजेबा होची एटा होची symbolic representation that is called symbolic representation. So Bruner has given 3 mode of learning: enactive mode, iconic mode and symbolic mode. Okay. According to Benjamin Bloom's taxonomy, which level of cognitive learning involves the ability to apply knowledge and to solve problem in a new and unfamiliar situation. When you are applying your knowledge, लिखा है वर्ड ने वर्ड पर लिखा है apply applying जाउची आउ किसी भाबिया ना एथरे According to Lev Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development, what is the concept that refers to the support provided by a more knowledgeable person to help a learner accomplish tasks beyond their current level of ability? Self-regulation, scaffolding, zone of proximal development, cognitive apprenticeship. This is called as zone of proximal development, scaffolding. ये दीटा काट दियो आपको कौन दी scaffolding कोई चीज support only question दीजिए refers to the support. That support is called as scaffolding. ZPT रे confuse होगा नहीं कोई नहीं तो gap time period कोई नहीं से. According to John Dewey educational philosophy, what is the primary focus of education? Acquiring knowledge and facts, preparing students for standardized tests, developing critical thinking and problem solving skill, training students to for specific profession. John Dewey सबले focus करथले progressive education, child centric education जोटी पिलार critical thinking और problem solving skill बढ़ा जाय परिबो. Which educational theorist is associated with the concept of flow? Concept of flow के देछन education में flow टा बहुत important. Where learners are fully immersed and deeply engaged in an activity due to its optimal level of challenge or interest. Learning रे flow टा निहित दरकार. ये concept देछन किए जेरम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, बेंजामिन ब्लूम, मिलेहे, सिस्केजनो, हाँ सिस्केज C silent, Sikez, Gent Mihaly, Sikez, Gent Mihaly. Sir, flow concept has been given by whom? बाकी 3 जन को चिन्ह आको चिन्ह बोले आको कहछो ना. Yes. ऑप्शन डी. मिहाली देछन मिहाले दिल है. अरे जरा मिहाले दिल है. According to Paulo Freire's critical pedagogy, what is the primary goal of education? खाली क्वेश्चन दिला रात रे. अच्छा. Transmitting standardized knowledge to students, empowering learners to think critically and become agent of social change, preparing students to excel in standardized tests, instilling discipline and obedience. सब वाले Paulo Freire believe करथले जे पाठ पढ़ी कि तमे जदि social change आनी परिबो, that will be the great education. Empowering learners to become a agent of a social age. Paulo Freire जने social reformer ना ब्राजील रो. Which educational theory emphasizes on zone of actual development? So zone of actual development ऊपर किए गुरुत्व देछन्ति? zone of proximal development तो सुनिଛ. zone of actual development ऊपर किए गुरुत्व देछन्ति? सही जी proximal development ऊपर गुरुत्व देछन्ति सही है. actual development ऊपर गुरुत्व देछन्ति that is Lev Vygotsky. Done. According to Howard Gardner theory of multiple intelligence, which type of intelligence involves understanding and interacting effectively with the others? कोटी हमें अन्य मानक सहित effectively interact करू. अन्य मानक सहित interact करिबाटा होची interact means interpersonal. Yes, option C. कर्ण बैच जोड़ा अंगनवाड़ी सुपरवाइजर बैच पिला माने आपनकर एटा 5 अगस्त स्टार्ट होबा जाउची. ओके ता सहित आपनकर पिला माने जेटी रो पेपर 1 पेपर 2 रो दिटा को बैच 3 अगस्त स्टार्ट होची. यू कैन परचेज एनी बैच बाय अप्लाइंग माय कोड Y594. ओडिशा जीके पे लक्ष्य बुक आडा 24 स्टोर रे अवेलेबल ता सहित आडा एटीएस हमरा ऑफिस रे अवेलेबल अछि. यू कैन परचेज इट. आपन कहतले ओडिशा प्राइम टेस्ट बैच जार लाइफ टाइम वैलिडिटी ता सहित अग्नि बैच OSSC फायरमैन और कांस्टेबल बैच
and one of our dream when it's being going to be fulfilled I don't know, but जो दिन हबो से दिन हमें दबा प्राइज। सर आप क्लास रे पीडीएफ मिलुची? हां पीडीएफ मिलियो। क्विज हो सर पेडागोजी क्विज कोठी सर टेलीग्राम चैनल ले सर, चैनल ना कोन पेडागोजी बाय सत्य सर। यस, and these are the prizes that are waiting for you. Solution is Mahapack। सब जगह इतने सारा मल्टीपल बैच सॉल्यूशन अछि Mahapack। सब जगह बैच हो किसी स्पेसिफिक बैच छाड़ देले, मल्टीपल बैच हो कि टेस्ट सीरीज हो, ई बुक हो, दैट विल अवेलेबल इन Mahapack। आपण जदि Mahapack परचेज करछन बो कोड Y594 देक मात्र 4880 टका रे, बिकॉज़ Mahapack र प्राइस बढ़ी जबा पे जाउछि। ओके, इट विल इंक्रीज। आपण माने जदि एडा ऐप डाउनलोड करना पिला माने डिस्क्रिप्शन लिंक अछि, एडा ऐप डाउनलोड करंतु। And one more of one, thanks for watching RHT Odia। देखा पिला माने काली। थैंक यू। जय जगन्नाथ। नमस्कार।